First of all, I would like to thank SMP committee to giving me an opportunity to be here and part of this one of unique event that has been organized to improve the efficiency of the efficacy of SMPs. Basically, our role is to provide and strengthen the SMPs. Once SMPs are strengthened and our auditors can do better role and deliver much better for the society as well for the institute. Let's start. Okay. So start with our audit procedure, like what are the audit procedure we normally perform while carrying out the audit of SSC or large size or whatsoever. We can say that basic fundamentals are same: inquiry, analytical procedure, re-performance, recalculation of the audit procedure carried out by the company and the department, observation such as observation of stock check and the procedure followed by the entity, and inspection of fixed assets and the stock taking, inspection of the documents and underlying record, confirmation obtained from the banks and other parties so that we have direct confirmation from the party independent from the management side, and inquiring further the management once we receive there is a difference on one part, and so that there is a collective procedure are followed for the purpose of the audit. And my role is to present the understanding of the preliminary review and the analytical procedure while performing the internal external audit. Like what auditing standard requires us what to understand that enhance the understanding of the business. The term analytical procedure means evaluation of financial information through analysis of plausible relationship, examination of trends and ratios among both financial and non-financial. I think auditors usually perform this type of audit procedure by building their expectation level from the understanding of the business and typical transaction based on their experience they have, and what type of analytical procedure we use. I come to another slide that what is the objective of the analytical procedure. Analytical procedure advise the auditor to understand its business understanding, significant transaction understanding, like any unusual transaction is not going there, or identify the risk area, and then determining the existing of unusual transaction. There are four major type of identification area we can understand from the performing analytical procedure. My personal view is that while carrying out the analytical review based on the assessment from the financial statement, we can go through the profit and loss account of the company and as well as from the financial statement. First of all, we should focus on the there should not be any accounting blunder, counting fundamental error. I've seen number of times, we normally don't carry long-term loan at amortized cost, despite the fact interest-free amortized loan is carried out in the balance sheet, and whatsoever SCCP or even institute while performing QCR, they can point out that these loans should be carried out the amortized cost. This is a blunder that can be identified at initial level, and sometimes I've seen that a different type of the errors on the part of the auditors as well as from the management. Let me introduce a brief introduction that I have also worked with the SCCP in 2001 to 2004. At that point of time, while reviewing the financials, SCCP started taking legal action against the auditors. This was the first time in 2002. And at that point of time, the auditor issued report which was obsoleted for the couple of years. And they preferred to issue the old report. Even at that point of time, these were listed companies. I'm not talking about the unlisted companies. This was our auditor role at that point of time. Let's come to another point, risk of material misstatement.
I think there is. In applying analytical procedure, risk assessment procedure, the auditor perform analytical procedure relating to revenues for the staff with the objective of identifying unusual or unexpected relationship involving the revenue account that might indicate a material misstatement. Like we need to understand that variation in the revenue as compared to last year, and there is a significant increase in the revenue or some drop in there, like uh, we just understand from the scanning of the transaction from the ledgers that is there any potential change subsequent to the reporting date, like June is the reporting date, there are certain transactions which were reversed in July, or this is happening for the last many years. This type of cases identify the risk of misstatement on the part of the management, and this type of the error can be identified through while using analytical procedures. Analytical procedure can be used by an auditor to accomplish these three purposes: risk assessment procedures, substantive analytical procedures, and final analytical procedure. Risk assessment is a basic premise of the analytical procedure, like we perform for the purpose at the planning stage. And substantive analytical procedure is performed while as other part after completing the planning phase, then while performing substantive analytical procedure. And final analytical conclusion is drawn based on the planning and the substantive procedure and other corroborative audit evidence gathered by the auditors. And these conclusion can lead to any sort of qualification or satisfactory conclusion. Normally, another, I intentionally skip one part, but there are two types of the most commonly used analytical procedure in the audit: trend analysis and the ratio analysis. Trend analysis are most commonly used by the audit firm, auditors, and guided by the international practices. Like we perform changes from 1 year, one period to another period. What is the change? If there is a significant change, like anything over and above 10 to 15% is a significant change, there should be some reason for that. If the just change in the one balance to another balance is less than that, we need to we may ignore but for initial planning purpose. But any change from beyond the 50%, 25%, we may consider a reason for that purpose, so that we would be able to finalize. Another point, addition, auditor usually use trend and ratio analysis by comparing the amount of balances they obtain from the client's accounts or record to their expectation that were built by using the knowledge obtained in previous year, industry practices, and current economic developments. Trend analysis is the process of comparing the data from one period to one or more comparable periods, including both comparing the prior period data and comparing the projection based on the changing pattern in the historical data of the company. Trend analysis may include comparing ratio from one period to another or evaluate a relationship between data, both financial and non-financial data. For instance, I understand that there is a borrowing in the company is around 2 billion rupees, and the interest rate is remained for the last year is around 8%. We may compute that on the basis of that 8% multiplied by 2 billion, what it's come to 160 million. If our financial cost is around 160 to plus minus 10%, is a reasonable justification that our borrowing, if the borrowing remains constant. If there is the ups and downs in the borrowing, like short-term borrowings, it depends upon the balance used by us. But for the long-term borrowing, it can be calculated by easily. And similarly, we may have like we identify like salaries, wages, and other benefits. Like there is an inflation effect of 10% increase by the management, and what the salary used by the company last year, and there is an increase of around 10%. That's fine for initial purpose. Like
there is a normal inflation is 10% and our salary is increased by 10%. Yes, if there is an increase of 100%, then we will inquire from the management, what is the major reason? They will explain that we have hard number, so such number of employees during the year, or there is a substantial jump in the salary or some bonuses were given to the employees. There are a number of reasons that can be documented while preparing the analytical procedure. And similarly, we may check from the stock consumption pattern. In the previous year, our consumption pattern was like for an manufacturing concern, 50 kg per unit to produce that product. Now, the consumption pattern is different from the last year. That is questionable. That we will look into it. If the industry practice and the consumption pattern same with the previous periods, that is justifiable. Analytical procedure relating to revenue may include a comparison of sale volumes as determined from record revenue amounts with the production capacity. An excess of sale volume or production capacity may be indicative of recording fictitious. Like in Pakistan, you know that there is a possibility the companies have double books of accounts. And that may lead to our question, being an auditor, we should look into it, like that value of transaction and the quantity of the production and the sale quantity is reconcilable. And we need to coordinate with the production capacity, with the consumption of the electricity bill. And there are other elements so that we may coordinate in such a way that our production number of units sold are justifiable. And these type of the analysis give us an idea that there is a possibility of misstatement or something else. A trend analysis of revenue by month and sales return by month. Like we can compare monthly revenue in the books of account as compared to with sales tax returns. So that is there any possibility of the misreporting in the sales tax department or in the books? And shortly after the reporting date, like earlier I told that there is a possibility in companies to achieve the targets. They report the sales in the financial year in the June, and subsequently July or August or even September, they can record the sales return so that there is a credit note for the sales return. But in this way, they can achieve the target of the sales and higher profit for the general public and to the banks or regulator. This may indicate the existence of undisclosed side agreements with customer involving the return of goods, which, if known, would include the revenue recognition. There is a possibility for that part as well, but normally in practice, people may prefer to record the sales and reverse in subsequent period. Ratio analysis. Ratio analysis is a process of examining of various ratio of the company by comparing them to one or more comparable period to other companies in the same industries. Like we may compare for the asset turnover ratio, credit collection period, payable period, inventory turnover ratio. These are the ratio which can be helpful for the manufacturing concern. For that, we may look into understand that what was the credit cycle in the last period and what is now, and as compared to if we have market understanding, market information with us, industry practices, it can be comparable. But for at least our purpose, we should compare with the previous accounts as well as, unless there is an exception change that can be justifiable, that the 60 days converted into 45 days or 75 days, there should be some logical and plausible reason for the understanding. Ratio are usually formed from two or more counts or balances in the financial statement. It's a general concept.
like current ratio is a basic ratio is used by the entity to evaluate that their current ratio should be 1 to 1, so that bank may finance as per their financials. There should not be any issue. In this case, using ratio with trend analysis can help the auditor to identify unusual or unexpected changes in relationship between the account balances. By comparing account balances to industry data, by getting the industry data, something else like we are lacking in Pakistan. If we have the data, but it may be for obsolete, for a couple of years old data may be used by us for the industrial information. Auditor can be alerted by to any significant differences that could lead to a complication. Sir, I have a question. जी जी सर, कंपनी को फर्स्ट ईयर है इनकॉर्पोरेशन, सॉरी कंपैरेटिव फिगर्स नहीं है, तो रेशियो एनालिसिस कैसे करेंगे? थोड़ा लाउड बोलें सर, फर्स्ट ईयर है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के बाद, तो रेशियो एनालिसिस, सर रेशियो एनालिसिस कैसे होगा? रेशियो एनालिसिस फर्स्ट ईयर जैसे आपने एक रेशियो के जो फंडामेंटल आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग करनी कि मेरा बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस के मुताबिक ये चीज़ है कि हमने एक करंट सिंपल से चलते हैं करंट रेशियो पता आपको करंट एसेट का डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज निकल आई 1 to 1 है 0.5 है 1.5 है। आगे आप आते हैं कि हम देखते हैं हमने एसेट्स डेटर्स कलेक्शन पीरियड देखना है, ठीक है, हमने देखेंगे उसके अंदर ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स, उसका एवरेज लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और सेल्स के साथ कंपेयर करेंगे, उससे एक नंबर ऑफ डेज का पीरियड निकल आएगा। गियरिंग रेशियो देखी जाती है, वो इसलिए देखी जाती है लेवरेज कितना है। गियरिंग रेशियो को हम देखते हैं लाइक उसके टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, वो एक रेशियो देती है कि कंपनी किस लेवल पर लेवरेज है। अगर 15% है 100% है, इवन मोर देन दैट भी हो सकती है। लाइक आई हैव सीन few companies having a bank borrowing more than their sales. What do you say about this? आप मुझे बताएं आपका क्या व्यू है इसमें। अगर एक कंपनी की सेल्स उसकी बोरिंग से कम हो तो मेरे हिसाब से वो कंपनी बहुत हाईली रिस्की है। तो ये रेशियो एनालिसिस ही आपको कुछ गाइड करती है कि ये चीज़ क्या है। आप फिर देखते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट की कवरेज रेशियो क्या निकलती है, तो वो ताकि उस चीज प्रॉफिट इतना अवेलेबल है कि अब फाइनेंशियल कॉस्ट को कवर भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। लाइक करंट कमिंग इन दीज डेज आपके साथ क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ती जा रही है और इस वक्त फाइनेंशियल कॉस्ट का जो पैटर्न लास्ट ईयर 7% था, इस वक्त मोर देन 15% पे चला गया। फाइनेंशियल कॉस्ट डबल होगी। क्या उस कंपनी के अंदर इतनी कैपेसिटी है को बेयर कर सके। एक और इंस्टांस एक्सचेंज गेन लॉस आ रहा है आजकल, एक दूसरा पॉइंट है, लेकिन ये आपको उस प्लानिंग में देखना होगा कि जी क्या कंपनी की इंपोर्ट्स वो किस लेवल की है और उसमें कितना डेंट उन्हें बेयर करना पड़ेगा। हाँ जी, अच्छा, ये हम रेशियो एनालिसिस की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे पहले प्रेजेंटेशन में भी हमने रेशियो एनालिसिस की बेस पे एक सिनेरियो हमने स्टडी किया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक तो टिपिकल रेशियो एनालिसिस जो कि यूज होता है और अभी हमने किया भी, आप भी बात कर रहे हैं, इसमें आपने ये भी इशारा किया कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ट्रेंड है कि देयर कुड बी 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इवन मोर देन 2 बुक्स। चलिए हम 2 तक ही रहते हैं अभी। लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द थिंग्स। तो वहां पर जब ये ट्रांसलेट होती है, ये मतलब 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब किसी जिसको ऑडिटर के पास जो फाइनेंशियल्स आए हैं, तो somebody should have looked into them and they would have considered all of those things that we are talking right now. तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किसी भी जिस एंटिटी को हम देख रहे हैं, जिसके रिस्क हम असेस कर रहे हैं और ये ऑडिट प्लानिंग और प्रोसीजर हम डिसाइड कर रहे हैं, वहाँ पे जो उनके ऑपरेशनल साइड ऑफ द रेशियोज है, जो ऑपरेशनल चीजें हैं, उन रेशियोज को भी देखें। फिर जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियोज हैं, जिस तरह बैंकिंग की रेशियोज डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अगर हम उनको भी इस पिक्चर में ले आए तो ये एक ज्यादा ब्रॉडर और ज्यादा प्रैक्टिकल जो है वो सिनेरियो बनता है। नहीं ठीक है, बैंकिंग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप कहना चाह रहे हैं? बैंकिंग की रेशियोज थोड़ी सी डिफरेंट हैं, बाकी
इंडस्ट्री से? बैंकिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियोज भी है ना कुछ जो कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियोज हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए मैं अगर उस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या सर्विस सेक्टर का जो वॉल्यूम है कंपनी की एंटिटीज का लेवल बनता है वो कम से कम बहुत ज़्यादा। इंडस्ट्री जो है फाइनेंशियल सेक्टर एक लिमिटेड है, उसके स्पेसिफिक रेशियो है। लाइक हम कार की कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पर, और बेजल की मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए, काफ़ी कुछ है। फॉर बैंकिंग सेक्टर समथिंग एल्स, बट फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेरा ख्याल को ओवरऑल एसएमपीज के पास जो पोर्टफोलियो है वो मैन्युफैक्चरिंग और इन्हीं बैंकिंग का तो देखें सीधी सी बात है, गिनती के ऑडिट फर्म्स हैं, केपीएमजी है, ईवाईएफ, ये लोग हैं। तो मेरी ये इसमें पॉइंट है कि हमें एसएमपीज को उन चीज़ों की तरफ लेके जाना है, आगे लेके आना है जो उनके लिए बेटरमेंट हो, उनके स्टूडेंट्स के लिए भी आगे चीज़ आए। तो ये आपका पॉइंट वेल नोटेड है, लेकिन ये चीज़ को बिल्कुल हम देख लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं। ग्लोबल रिकंसिलिएशन जब आप बनाते हैं तो उसमें आपने देखना है कि आपका डिफरेंस किस लेवल का आया है। इस कई दफ़ा तो कैलकुलेशन करते हुए आपका इवन लेस देन 0.1% भी नहीं रहता, क्योंकि जितना कंपनी के अंदर डाटा आपके पास अवेलेबल होगा और जस्टिफाइबल होगा तो वो उसकी आपके ग्लोबल रिकंसिलिएशन में बहुत माइन्यूटली का माइनर सा डिफरेंस होगा, कि ये नहीं होगा कि 10% का फर्क रह जाए। आप कहेंगे तो कुछ थाउजेंड्स का, 150,000, 5,000 is a nominal difference that can be justifiable. And if आपका डाटा ठीक नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी नहीं है इंफॉर्मेशन की, फिर आपका फर्क आएगा। सर इसी पे देख लेते हैं, जैसे आपने कहा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होगा, तो क्या हम उस पे कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है कि एनालिटिकल रिव्यू के थ्रू ही हम इस पे कंक्लूड कर लेंगे ऑल इज ओके? आपने बाकी प्रोसीजर पूरे लगाने हैं। आपने देखें ग्लोबल रिकंसिलिएशन करते हुए सिर्फ आपने उसके पीछे बैकअप भी बनाना है कि लाइक आपने कहा कि इंक्रीमेंट का फैक्ट कितना आया, लीवर का कितना आया, ज्वाइनर का कितना आया, डिडक्शंस का कितना आया, और बोनस का कोई इम्पैक्ट आया तो वो देखना है। ये मल्टीपल फैक्टर आपने जब सारे उसके पीछे डाटा होगा तो फिर तो कंक्लूजन आसान होता जाएगा। यस, फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट आपने ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करने, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी फॉलो करने, लेकिन रेशियो आपकी कम हो जाएगी। आप ये नहीं कर सकते कि आपको जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल में चीज़ें कंट्रोल हैं तो आपने फिर सब्सटेंटिव में बहुत नीचे ले जाएंगे, मिनिमम पे चले जाएंगे। थैंक यू। अच्छा, by comparing account balance to the industry, auditor can alerted the significant differences that will lead to the company's issues. For example, if the company has much longer payable days comparing to industry, it may indicate the company is having a liquidity or cash flow problem. This would alert auditor to question the company about going concern issue. This is another example that this ratio analysis would show us that there is a longer period credit payables and long outstanding balances available appearing in the company's financial statements. Analytical procedure may be used in the following form: comparing account balances in the current period to one or more comparable period, comparing account balances to a company's budget and forecasts, comparing account balances of company to other companies in the same industry or companies, comparing to the industry averages. अगर हमारे पास अवेलेबल होगी इंडस्ट्री एवरेजेस तो हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं इस फोरम पे कुछ बात ये भी देखी है मैंने कि पाकिस्तान में आपको डाटा नहीं मिलेगा। मैं कुछ दिन पहले किसी एक डाटा की बात कर रहा था कि स्पिनिंग सेक्टर का क्या डाटा अवेलेबल है। सर मुझे उस बंदे ने मुझे कहा जी कि जी मेरे पास मेरी कंपनी का ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जो टोटल कैपेसिटी का 2% है। तो मैंने उनको कहा भाईजान 2% इट्स टू हाई फॉर योर साइट, डाटा ही अवेलेबल नहीं था। इवन एफ्टापा के पास गए तो उनके पास भी डाटा सिर्फ लिस्टेड कंपनीज का था, प्राइवेट सेक्टर का अवेलेबल ही नहीं। तो लिहाजा वो हमारे लिए जितना भी अवेलेबल है वो एक बेंचमार्क होगा
काफ़ी हद तक सपोर्टिव होगा, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आपके जो डाटे को एवरेज को प्लस माइनस करते हैं वो नहीं कर पाते। सीमेंट सेक्टर का डाटा अवेलेबल हो सकता है क्योंकि रेगुलेटेड है थोड़ा सा, इसको शुगर इंडस्ट्री का अवेलेबल हो सकता है, तो कुछ इंडस्ट्रीज का अवेलेबल होगा, काफ़ी इंडस्ट्रीज का आपको नहीं मिलेगा। Evaluating relationship to one account balance to another account balance with the predictable pattern, increase in production, increase in production overhead. I mean, just like it's a directly with that, if production increase होगी तो production overhead भी definitely increase होने हैं, लेकिन क्या वो रेशो किस तरीके से बढ़ रही है ये हमने evaluate करना होगा उसमें। Evaluating relationship of account balances to non-financial data, इसमें हम इस तरीके से देखेंगे कि कई क्वांटिटेटिवली इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ भी अवेलेबल हो सकती होगी हम जाएंगे, उसको रिलेशनशिप को कोरिलेट करेंगे उसके साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ। पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑडिटर परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ द ऑडिट फॉर फॉलोइंग पर्पसेस, टू यूज as risk assessment procedure to obtain an understanding of the client and the risk that client exposes to। सबसे बड़ा काम जो हमें मिलेगा वो रिस्क असेसमेंट होगी क्लाइंट की, क्या उसके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हमने जो उसको एनालिसिस किया उससे कोई रिस्क तो नहीं आइडेंटिफाई तो नहीं हो रहा। उसके बाद रिस्क टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हमने ये देखना है कि कोई जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट की तरफ तो नहीं जा रही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई हो जाए, अकाउंटिंग का मसला नजर आ जाए। टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, अब हमने क्या करना है, ऑडिट एविडेंस, जैसे आपने बात की अभी कि ऑडिट एविडेंस हमने ले लिया ग्लोबल रिकंसिलिएशन करके, क्या पूरा ये आइडेंटिफाई करेगा यहाँ से अगर मेरा डिफरेंस 10% आ गया और वो फिगर एक मटीरियलिटी लेवल से भी ऊपर है, फिर क्या करेंगे, फिर वो मेरा ख्याल ग्लोबल रिकंसिलिएशन ठीक नहीं बनी, ठीक है, उसका डाटा आपका नहीं ठीक होगा, उसको आपने देखना। To form an overall conclusion whether the financial statements are consistent with the auditor's understanding of the client and the end of the audit। ये एक परसेप्शन जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी कि लाइक जिस चीज़ का हम काम करने जा रहे हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्या ये एक्सपेक्टेशन पे मीट कर रहे हैं कि नहीं हम लोग। द फर्स्ट स्टेप इज द डिसीजन प्रोसेस टू is to develop an expectation from the amount or account balance. This is the most important step in the performing analytical procedure. Auditing standard requires the auditor to have an expectation whenever analytical procedure is used. An expectation can be developed from analytical procedure from a variety of sources such as financial and operating data. Basic data तो हमें financial से ही मिलेगा, books of accounts से निकलेगा, बजट से भी देखेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे, अच्छा जी हमने बजट में क्या फोरकास्ट किया था, रिजल्ट्स क्या एक्चुअल अचीव हुए, उसकी रीज़न क्या थी, और कंपनी जहाँ पे बजट फॉलो किए जाते हैं वहाँ पे हर एक एक्चुअल कंपैरिजन के साथ उसका कंपैरिजन भी बनता है जब भी क्लोज होता है। इंडस्ट्री पब्लिकेशन क्या आ रही है हमें, कंपेटिटर इंफॉर्मेशन क्या निकल रही है, मैनेजमेंट एनालिसिस क्या है खुद जो करते हैं, एनालिस्ट रिपोर्ट्स लाइक स्टॉक एक्सचेंज के जो एनालिस्ट है वो अपने उस पर रिपोर्ट दे रहे होते हैं, उससे इंडस्ट्री की एवरेज आउट कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, उससे हम कंपेयर कर लेते हैं। प्रिसीजन ऑफ एक्सपेक्टेशन, क्या जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसका उससे कितना के हम करीब करीब हैं। लाइक प्रिसीजन इज अ मेजर ऑफ द पोटेंशियल इफेक्टिवनेस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, इट रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ रिलायंस दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द प्रोसीजर। प्रिसीजन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। डिसएग्रीगेशन मीन दैट अगर हम एक होलिस्टिक व्यू लेंगे और ग्लोबली चीज़ों को वैल्यूएट करेंगे तो वो डिफरेंट रिजल्ट आएगा, लेकिन हम उसके जो बेसिक एलिमेंट्स पे जाकर जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी। लाइक हम एनुअल पे एक कंपैरिजन करेंगे, एक मंथ वाइज कंपैरिजन करेंगे, तो वो एक डिफरेंट आपको लुक देगी। डिसएग्रीगेशन मीन कि हमें नीचे जाना पड़ेगा, बिल्कुल ट्रायल बैलेंस के जनरल लेजर के जो फाइनेंशियल कंपोनेंट पे नहीं, उसके निचले कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा। जी या segmentation, exactly. Plausibility and the predictability of the relationship being studied, क्या ये चांस है कि जो हम बात कर रहे हैं कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं, तो उसको भी देखना कि हमने प्रिसीजन में हमने गलत तो नहीं इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर रहे। डाटा रिलायबिलिटी द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट, क्या डाटा जो लिया है हमने यूज़ कर रहे हैं वो रिलायबल है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी ठीक है, हमने जो अजम्पशन यूज़ की है, लाइक जैसे हमने कहा कि जी इंक्रीमेंट लगा दे जी हम 10% हुई थी, लेकिन मेरे पास सोर्स कोई नहीं है,
ग्लोबल रिकंसिलिएशन बनाते हैं, जुबान नहीं है। हाँ यस मेरे पर रिलायबल होना चाहिए जो डाटा हो। टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, analytical procedure at planning stage. The use of analytical procedure as risk assessment procedure at planning stage is to obtain an understanding of the client in business environment. This is the foremost purpose at planning stage, जो हमें आइडेंटिफाई करके देगा कि हमारे रिस्क एरिया कौन कौन से हैं और हमने किस एरिया पे काम करना है। As a result, the auditor may identify high-risk area which they are not aware of and assist them in determining the nature, timing, and extent of the audit procedure to address the risk of material misstatement. मैं एक्चुअली एक बात थोड़ा सा ऐड कर दूं, इसी पर्सपेक्टिव में कुछ अर्सा पहले एक अकाउंट्स मेरे पास आते हैं और कहा गया कि जी आप तरह इस पर वेट करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑडिटर, कोई और थे या उन मैनेजमेंट ने अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, ऑडिटर ने रिपोर्ट मॉडिफाई कर दी। अब ये देखें ये चीज़ें असेसमेंट जब हम बीइंग ऑडिटर भी जाएं तो क्लाइंट को समझाएं कि भाईजान ये आप क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट मॉडिफाई करना इशू नहीं है, असल चीज़ है क्लाइंट को भी बिहेवियर की तरफ लेके जाना, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉप से ही मिल जाएगी। Disaggregation, the more detailed the level at which an expectation is formed, the greater the precision. Expectation formed using monthly data will be more precise than expectation from using the annual data. Misstatements are difficult to detect when analyzing data at aggregate level due to offsetting trends or activities that can mask risk and misstatements. Sometimes आपके बैलेंस के अंदर कोई फर्क नहीं है, 2% 4% का ट्रेंड एनालिसिस में आया थी कि 4% का फर्क है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, एक बैलेंस खत्म हो गया दूसरा बैलेंस आ गया, और जो बैलेंस आया वो एक कह लें आप कहते हैं ना कि बिच्छू है जो हमने आइडेंटिफाई करना है। हमारा मकसद ये चीज़ होती है कि जब इस चीज़ों को देखें कोई ऐसी चीज़ छुपी तो नहीं हुई जो हमारे लिए भी बीइंग ऑडिटर रिस्की हो और क्लाइंट ने हमें हाइड की हो, तो समटाइम क्लाइंट इस चीज़ों को लेके चलते हैं। Plausibility and the predictability of the relationship between studies. The primary concern with the plausibility is simply whether the relationship used to test the assertion makes sense. For example, it is usually plausible to expect that increase in sales should lead to increase in accounts receivable and vice versa. Like सेल हमारी इंक्रीज कर रही है तो हमारा ओवर साइकिल जो है साइकिल भी वही रहा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मार्केट में रिसीवेबल बढ़ गया। यस या तो फंडामेंटली मेरा को चेंज आया कि जी मैंने एडवांस में काम करना है तो मेरा रिसीवेबल का बैलेंस कम हो जाएगा। जहाँ मैंने उसको डिवाइड कर लिया कि जी हमने सेल को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स। कैश सेल्स सेपरेट हो जाएगी, फिर मैंने उसको क्रेडिट सेल्स को कंपेयर करना है विद रिसीवेबल्स ताकि मेरा उस साइकिल को कंपैरिजन निकले। वही डिसएग्रीगेशन वाली बात के नीचे लेवल पे जाके उसको कंपेयर करेंगे rather than टॉप लेवल पर। The more plausible and predictable the relationship, the more precise the expectation. Data reliability. The ability to develop a precise expectation is influenced by the reliability of available data. The reliability of data for developing expectation depends on independence of the source of evidences, effectiveness of internal control, auditor direct personal knowledge. अब हम ऑडिट के लिए जब जाएंगे, टीम जाएगी, हर दफ़ा एक नई टीम जाती है, वो अपने पहले बेटर अंडरस्टैंड वॉक थ्रू करेंगे और अंडरस्टैंडिंग लेंगे और वहाँ से उनको समझ आएगी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला काम तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को डॉक्यूमेंट कर लिया हमने, उसके बाद हमने उसको इंटरनल कंट्रोल को एवेल्युएट किया, वॉक थ्रू किए थे और टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर लिया, डॉक्यूमेंट किया। उससे एक चीज़ पता चलता जाएगा क्या चीज़ें। अगर मेरे पास एक स्कूल का ऑडिट है और मेरे पास उसके अंदर ये भी पता है कि वो कैश फीस नहीं कलेक्ट करते, तमाम फीस बैंकिंग चैनल से आती है, तो मेरा रिस्क रेवेन्यू कलेक्शन का तो मिनिमाइज हो गया। फिर रह जाएगा क्या मेरे पास सैलरीज के अंदर रिस्क तो नहीं है, सैलरीज के अंदर कोई ऐसी फीसेस चार्ज तो नहीं की कर रही, हायर गोस एम्प्लॉइज तो नहीं है जो ऑफिस में भी नहीं आते, हाई सैलरीज ले रहे हैं, या डायरेक्टर जो भी अपनी सैलरी लेते हैं वो एक पार्ट फ्रॉम दैट गोस एम्प्लॉइज का रिस्क बढ़ जाता है ऐसे इदारों में। और कोई चीज़ नहीं, लीगल चैनल से पैसा आता है, लीगल चैनल से पैसा जा रहा है।
In addition, data for analytical procedure are more reliable when the data are subjected to audit in the current or prior period when the expectation is developed from the multiple source of data. Like मेरा क्लाइंट जो भी है मैं उसको देख रहा हूँ पिछले सालों से, तो मुझे समझ आती है कि इसका हिस्टोरिकल ऑडिट भी हो रहा है, इंफॉर्मेशन भी है, मेरे पास नॉलेज भी है। अगर मेरा पहला साल है ऑडिट का और ये भी पता है पिछले 5 सालों से ऑडिट नहीं हुआ, तो उसकी रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन हाईली क्वेश्चनेबल हो जाएगी। फिर हमें इसका रिलायंस कम करना पड़ेगा और हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट तो हम कर लेंगे जो भी, लेकिन रिलायंस का लेवल नीचे लाकर सब्सटेंटिव प्रोसीजर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। टॉलरेंस लेवल जस्ट लाइक जैसे कि कोई एक हम थ्रेशोल्ड डिफाइन कर लेते हैं कि अगर ये डिफरेंस आया तो क्या ये एक्सेप्टेबल है, वो 1% में हो सकता है, क्वांटम में हो सकता है, तो उस डाटे को कंपेयर करेंगे इस डिफरेंस से। द साइज ऑफ अ टॉलरेबल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द काउंट, the desired degree of reliance on the substantive analytical procedure, the level of disaggregation in the amount being tested, and the precision of the expectation. Compare the expectation to the recorded amount. The next step is to analytical procedure decision process is to determine if the amount of difference between the auditor expectation and the recorded amount exceed the auditor tolerance difference. अगर वो मेरी कर जाएगी तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हमें यानी कि ऑडिट डिफरेंस बढ़ गया तो हमें अपने ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ाना पड़ेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी इनहेंस करेंगे और अदर ऑडिट प्रोसीजर से जाके उस चीज़ को देखेंगे। अगर लेस देन दैट है फिर एक नॉर्मल प्रोसीजर की तरफ रहेंगे, वहीं पर इसको आगे लेके चलेंगे। देखिए जजमेंट, जहाँ पे मेरी जजमेंट आएगी कि साइज ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। अगर मेरा मैंने एक जजमेंट की उसके हिसाब से, अगर मैंने कोई से 100 मिलियन की ट्रांजैक्शन उसको मैं ग्लोबली रिकन्सिलिएशन की तरफ लेके जा रहा हूँ या उसको मैं वैल्यूएट कर रहा हूँ, तो उसका अगर डिफरेंस आ रहा है 5 मिलियन, उसके अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं लाइक ये एक्सेप्टेबल है, हाँ यस 1.5 लाख आ गया, 2 लाख आ गया, 50,000 आ गया, 3 से 4 लाख आ गया, दैट इज जस्टिफाइबल बेस्ड ऑन द डाटा इंफॉर्मेशन मेरे पास जैसे आया है। अगर मेरे पास वो डाटा और इन्फॉर्मेशन का लेवल कम है तो मेरा ये डिफरेंस बढ़ेगा और रिजल्ट भी वो ऐसे ही आएगा जैसे मैं कहूँगा मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। लेकिन सर ये इस डिफरेंस को जो हमारी जो नॉर्मेलिटी है एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर, इसको मटेरियलिटी के साथ हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हम देखिए परफॉर्मेंस एरिया लेवल। यस बिल्कुल बिल्कुल बस सही कह रहे हैं। अच्छा एक इसी में एक चीज आ जाती है, अगर ये डिफरेंस आ भी जाए तो अब उसको क्या करते हैं, बीइंग ऑडिटर हम इसको क्या डॉक्यूमेंट करके छोड़ देते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं डिफरेंस को? नहीं हो रहा, आगे क्या करेंगे? आगे यही है कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। ऑडिट प्रोसीजर मुझे किसी ने बताया कुछ अर्सा पहले कि कहीं पर ये डिफरेंस निकलता था और क्लाइंट कहता था कि जी जेबी डाल दें। जजमेंट यूज कर रही है और ये जजमेंट जो यूज कर रही है ये स्टैंडर्ड में कहीं प्रिस्क्राइब्ड है कि ये आपका पर्सनल व्यू है? नहीं सर, ये डॉक्यूमेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पर प्रिस्क्राइब किए हुए है, ये जरा रेफर करें ताकि मैं आपको कर देता हूँ। हमें जब बर्नर्ड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाले आते हैं तो हम उनको बता सकें कि मोस्ट ऑफ द टाइम जजमेंट थ्रेशोल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यूज कर सकते हैं या कि ये ब्लाइंड और डेफ नहीं है। नहीं वो तो भी ये जरा इसको रेफर करें थोड़ा सा ताकि हमारे जो प्रैक्टिसिंग स्मॉल मीडियम प्रैक्टिसिंग मेंबर उनको ये बहुत से थ्रेट्स और रिस्क है, तो इसको काइंडली जरा रेफर भी साथ कर दें। राइट, चलें सर आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेट द डिफरेंस ग्रेटर देन टॉलरेंस लेवल, जस्ट लाइक जैसे अभी हम बात करेंगे तो उसको फर्दर वैल्यूएट करेंगे और डिफरेंसेस को रिजॉल्व करेंगे। नहीं होगा तो फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रन थ्रू कर देता हूँ कि लाइक एक्सप्लेनेशन फॉर सिग्निफिकेंट ऑफ डिफरेंसेस, क्वांटिफाई हमने करना है डिफरेंसेस को।
जब हम कोई भी काम करेंगे डिफरेंस आएगा तो उसकी क्वांटिफिकेशन होगी। लाइक मैं अगर कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहा हूँ तो प्रोडक्शन को, सेल्स को उसके साथ मैच कर रहा हूँ, यानी कि वहाँ से अगर मैच करूँगा तो मैं कुछ क्वांटिफाई करूँगा, फिर उसकी वैल्यू असाइन करूँगा। तो हर चीज़ को क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है। देखिए मैं ये कह सकता हूँ इतने नंबर केजी का डिफरेंस आ गया, इतने नंबर यूनिट्स का फर्क आ गया, और मैं उसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रहा तो वो क्वेश्चनेबल है। तो हमें हर चीज़ को क्वांटिफाई करना है क्योंकि फाइनेंशियल नंबर्स की बात है। अब कोलैबोरेटिव ऑडिटर्स दूसरे जो एविडेंसेस इकट्ठे करेगा, इसके साथ साथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेगा मुख्तलिफ चीज़ों से जाते हुए, तो वो भी इसको कोलैबोरेट करके अपने कंक्लूजन की तरफ आगे लेके जाएगा। Analytical procedure at planning stage, the auditor may use analytical procedure to perform examination। मैंने जस्ट एंड पे आकर 3 चीज़ें बताई हैं ये कि क्या चीज़ होगी, but examination relation between sale and cost of sale by comparing the prior period for the industry average, this would help to assess the material error of our auditor may also evaluate relationship between financial information, non-financial data, फिर एविडेंस गैदरिंग प्रोसीजर, लाइक वहाँ प्लानिंग में आए, फिर हम एनालिटिकल प्रोसीजर करूँगा, एविडेंस गैदरिंग के लिए करूँगा, ताकि उसके वो कंट्रोल वहाँ से अगले लेवल पे जाके कंक्लूजन की तरफ जाएगा। रिलायबिलिटी ऑफ डाटा ये हम बात कर चुके हैं, ये मैंने समराइज किया यहाँ पर सारा कुछ। मटेरियल में स्टेटमेंट आएगी तो उसको क्या करना है, वेदर डिफरेंस बिटवीन recorded amount and expected level, just like जैसे इन्होंने लिखा how much difference in percent can be accepted 3, 5 or 10, usually auditor will reduce the acceptable level of difference in order to increase the desired level of assurance। अगर इसको नीचे रखेंगे तो हमारा desired level पे हम अचीव करेंगे। Conclusions, auditor need to perform analytical procedure at the end of the audit at before the finalization of the financial statement so that they may conclude there is no material misstatement in the financial statements. If the auditor is satisfied, it's a clean report, otherwise modified report. Thank you very much.